हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनंद नर्सिंग फाइल। आज हम वीडियो में बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 6 का यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 6 में शामिल किए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ओबीजी नर्सिंग फर्स्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से यूनिट है इनमें और क्या क्या इनके कंटेंट्स होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 6 का सिलेबस। नर्सिंग सेमेस्टर 6 में देखते हैं पर कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं अकॉर्डिंग टू आईएनसी: चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मिडवाइफरी एंड ओबीजी नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग फर्स्ट। तो ये सब्जेक्ट हम यहाँ देखेंगे, इसमें कौन कौन से यूनिट और कंटेंट्स हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड, प्लेसमेंट 6 सेमेस्टर, टोटल थ्योरी आवर्स इसमें 40। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इसके कंटेंट्स होंगे। चाइल्ड नर्सिंग सेकंड का यूनिट होगा फर्स्ट नंबर का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक एंड असाइनोटिक। अदर्स में रियूमेटिक फीवर, रियूमेटिक हार्ट डिजीज, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, हिमेटोलॉजिकल कंडीशन। इसमें कंजेनिटल हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, अदर्स में एनीमिया, ल्यूकेमिया, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, हॉडकिंस एंड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंजेनिटल malformation, congenital cleft lip palate, congenital hypertrophic pyloric stenosis, Hirschsprung's disease, megacolon, anorectal malformation, malabsorption syndrome, abdominal wall defect, hernia। अदर्स में गैस्ट्रोएंट्राइटिस, एंट्राइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेपेटिक डिजीज, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, कंजेनिटल बिलियम्स ट्यूमर, एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर, हाइपोस्पीडियासिस, एपिस्पीडियासिस, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। अदर्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम, acute glomerulonephritis, renal failure। नर्वस सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, कंजेनिटल स्पाइनल बिफिडा, हाइड्रोसेफेलस। अदर्स में मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, कन्वल्सन्स एंड सीजर्स, सेरेब्रल पाल्सी, हेड इंजरी। तो ये यूनिट फर्स्ट के कंटेंट्स थे चाइल्ड नर्सिंग सेकंड के। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड में ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर में क्लब फूड, नेक्स्ट हिप डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, डिसऑर्डर आई, ईयर एंड स्किन में रिफ्रैक्टिव एरर, ओटाइटिस मीडिया एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस। कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन, दियर आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, इन होम, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस, poliomyelitis, measles, mumps and chickenpox, HIV AIDS, dengue fever, COVID-19। यूनिट नंबर थर्ड में मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड मैनेजमेंट, एन्यूरेसिस एंड एंकोपेरेसिस, नर्वसनेस, नेल बाइटिंग, thumb sucking, temper tantrum, stealing, aggressiveness, juvenile delinquency, school phobia,
school phobia, learning disability, psychiatric disorder in children and management, childhood schizophrenia, childhood depression, conversion reaction, post-traumatic stress disorder, autistic spectrum disorder. नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू. ईटिंग डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड मैनेजमेंट, ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, मेंटली, फिजिकली, सोशली, चाइल्ड अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, और लास्ट में वेलफेयर सर्विसेज फॉर चाइल्ड एंड चैलेंज चिल्ड्रंस. तो यूनिट थर्ड और इसके कंटेंट्स होंगे. तो ये था बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 6 का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के सेकंड का सिलेबस, जिसमें यहाँ पर टोटल 3 यूनिट शामिल किए हैं. टोटल 3 यूनिट यहाँ पर इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड में शामिल की गई हैं. अगला सब्जेक्ट देखते हैं यहाँ पर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, प्लेसमेंट सेमेस्टर 6, टोटल थ्योरी आवर्स यहाँ पर 40 घंटे. नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी यूनिट कंटेंट होंगे यहाँ पर. फर्स्ट यूनिट होगा यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर. इसमें देखते हैं कौन कौन से कंटेंट्स होंगे. प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस, commonly used psychotropic substance, classification, forms, routes, action, intoxication and withdrawal, psychodynamics, etiology of substance use disorder, terminology, substance use, abuse, tolerance, dependence, withdrawal, diagnostic criteria, formulation. Next, nursing assessment history, substance history, physical mental assessment and drug assay. नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटाव्यूज एंड नार्कोटिक एंड एंटागोनिस्ट थेरेपी एंड हार्म रिडक्शन, ब्रीफ इंटरवेंशंस, एमईटी, रिफ्यूजल स्किल्स मेंटेनेंस थेरेपी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन, फॉलो अप एंड होम केयर एंड रिहेबिलिटेशन. नेक्स्ट सेकेंड यूनिट देखते हैं आप इसमें, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद पर्सनैलिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, जिसमें प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, ईटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, करेक्टरिस्टिक्स एंड डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट हिस्ट्री, फिजिकल एंड मेंटल असेसमेंट. कंटिन्यू. ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद पर्सनैलिटी एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, जेरियाट्रिक कंसिडरेशन, फॉलो अप एंड होम केयर एंड रिहेबिलिटेशन. यूनिट थर्ड में देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर अकरिंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट, प्रिवेलेंस, इंसिडेंस, क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजी, साइकोडायनेमिक्स, करेक्टरिस्टिक्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, फॉर्मुलेशन. नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू. नर्सिंग असेसमेंट हिस्ट्री, फिजिकल मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, आईक्यू असेसमेंट, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फॉलो अप एंड होम केयर रिहेबिलिटेशन. यूनिट फोर्थ देखते हैं उसके कंटेंट्स यहाँ पर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, डिलीरियम, डिमेंशिया, एमनेस्टिक डिसऑर्डर, प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस, क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड differential diagnosis. Nursing assessment history, physical, mental and neurological assessment, treatment modalities and nursing management of organic brain disorder, follow up and home care rehabilitation. यूनिट फिफ्थ में देखते हैं. यूनिट फिफ्थ हो गया पर साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज, अटेम्प्ट सुसाइड, वायोलेंस, एग्रेशन, स्टूपर, डिलीरियम, tremors and other psychiatric emergencies and their management. Next, maladaptive behavior of individual and groups, stress, crisis and disaster type of crisis, crisis intervention principles, technique and process, stress reduction intervention as per stress adaptation model, coping enhancements, technique of counseling. यूनिट 6 में देखते हैं यहाँ पर. यूनिट 6 हो गया यहाँ पर लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओवरव्यू, Indian Lunacy Act and Mental Health Act 1987,
Protection of Children from Sexual Offences, POSCO Act, POSCO Act. Next, Mental Health Care Act, MHCA 2017. Right of Mentally Inclined, Forensic Psychiatric Nursing Act related to narcotic and psychotropic substance and illegal drug trafficking. नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर एज पर MHCA 2017. नेक्स्ट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन इम्प्लीमेंटिंग MHCA 2017. नेक्स्ट यूनिट 7 देखते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज नेशनल हेल्थ पॉलिसी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम institutionalization versus disinstitutionalization. Next, model of preventive psychiatric mental health services available at the primary, secondary, tertiary level, including rehabilitation and nurses' responsibility. नेक्स्ट देखते हैं मेंटल हेल्थ एजेंसीज गवर्नमेंट एंड वॉलेंट्री नेशनल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ नर्सिंग issue for the special population children adolescents women elderly victim of violence and abuse handicapped HIV AIDS etc. मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड का सिलेबस जहाँ पर टोटल 7 यूनिट शामिल की गई हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सेमेस्टर सिस्टम सिलेबस. नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप नेक्स्ट सब्जेक्ट है. इसको सेमेस्टर 6 में शामिल किया गया है. ये टोटल थ्योरी आवर्स है 60. नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी यूनिट और कंटेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं. तो इसमें देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट होगा पर हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया रिव्यू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन at global and national scenario. Next, recent trends and issues of nursing services and management. Second unit होगा management basic applied to nursing. Next, definition, concept and theories of management, importance, features and level of management, management and administration functions of management, principles of management, role of nurse as a manager. Next, introduction to management process, planning, organizing, staffing, directing, leading, controlling. Management of nursing services. Unit third होगा planning nursing services, vision, mission, philosophy, objectives, nursing services, policies, procedure and manuals, functional and operational planning, strategic planning, program implementing, Gantt chart and milestone chart, budgeting concept, principal types, budget proposal, cost benefit analysis, planning hospital and patient care unit ward, planning for emergency and disaster. Unit 4 होगा organizing as process, assignment, delegation and coordination, hospital types, function and organization, organizational development, organizational structure, organizational chart, organizational effectiveness, hospital administration control and line of authority, hospital statistics including hospital utilization indices, nursing care delivery system and trends, role of nurse in maintenance of effective organizational climate. Unit 5 होगा staffing, human resources management, definition, objective, components and function, staffing and scheduling, staffing philosophy, staffing activities, recruiting, selecting, development, training, development, credentialing, retraining, promoting, transfer, terminating, superannuation, staffing unit, projecting, staffing requirement, calculation of requirement of staff resources, nurse, patient ratio, nurse population ratio as per SIU norms, IPH norms and patient classification system, categories of nursing personnel, including job description of all level, assignment and nursing care responsibility,
turnover and absenteeism, staff welfare, discipline, grievance, in service education में देखते हैं. Nature and scope of in-service education program, principles of adult learning, review, planning and organizing in-service education program, method, technique and evaluation, preparation of report, material resources management, procurement, purchasing process, inventory control and role of nurse, auditing and maintenance in hospital and patient care unit. Unit 6 देखते हैं. Unit 6 होगा directing and leading, definition, principal element of directing, supervision, guidance, participatory management, interprofessional collaboration, management of objectives, team management, assignment, rotation, maintenance of discipline, leadership in management. Unit 7 होगा leadership, definition, concept and theories, leadership principles and competencies, leadership style, situational leadership, transformational leadership, methods and leadership development, mentorship, preceptorship in nursing, delegation power on policies, empowerment, mentoring and coaching, decision making and problem solving, conflict management and negotiation, implementing and plan change. Unit 8 होगा controlling, implementing standard policies, procedure, protocols and practices, nursing performance, audit, patient satisfaction, nursing rounds, documentation, record and report, total quality management, quality assurance, quality and safety, performance appraisal, program evaluation review technique, PERT, benchmarking, activity plan, Gantt chart, critical path analysis. Unit 9 होगा organizational behavior and human relations. इसमें देखते हैं concept and theories of organization behavior, group dynamics, review, interpersonal relationship, human relation, public relation in context of nursing, relations with professional association, employees union, collective bargaining, review, motivation and moral welding. Next, communication in workplace, assertive communication. Committees importance in organization functioning. Unit 10 होगा financial management. Definition, objective, elements, functions, principle and scope of financial management, financial planning, budgeting for nursing department, proposal, projecting, requirement for staff, equipment and supplies for hospital and patient care unit and emergency and disaster unit. Continue. Budget, budgetary process, financial audit. Unit 11 होगा nursing informatics, information management review, patient record, nursing record, use of computer in hospital, college and community, telemedicine, telenursing, electronic medical record, EMR, EHR. Unit 12 होगा personal management review, emotional intelligence, resilience building, stress and time management, distressing care planning. Unit 13 होगा establishment of nursing educational institution, Indian Nursing Council norms, guideline, faculty norms, physical facilities, clinical facilities, curriculum implementation and evaluation examination guideline, coordination with the regulatory bodies INC and State Nursing Council, accreditation, inspection, affiliation with the University, State Council Board of Examination. Unit 14 होगा planning and organizing, philosophy, objectives and mission of the college, organization, structure of school, college, review, curriculum planning, planning, teaching and learning, experience, clinical facilities, master plan, timetable and clinical rotation, budget planning, faculty, staff, equipment and supplies, aviates, lab equipment, library, books, journals, computer and maintenance, infrastructure facilities, college, classroom, hostel, library, labs, computer lab, transport facilities, record and report for student, staff, faculty and administrative committees and functioning clinical experiences.
यूनिट 15 हो गया पर स्टाफ एंड स्टूडेंट सिलेक्शन, फैकल्टी स्टाफ सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फैकल्टी डेवलपमेंट, फैकल्टी और स्टाफ वेलफेयर, स्टूडेंट रिक्रूटमेंट, एडमिशन, क्लिनिकल प्लेसमेंट। यूनिट 16 हो गया पर directing and controlling, review, curriculum implementation and evaluation, leadership and motivation, supervision, review, guidance and counseling, quality management, educational audit, program evaluation, evaluation of performance, maintaining discipline, institutional record and report, administrative, faculty, staff and student। नेक्स्ट यूनिट 17 हो गया पर प्रोफेशनल कंसिडरेशन, रिव्यू लीगल एंड एथिकल इश्यूज, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, characteristics of professional nurse, nursing practice, philosophy and objectives, regulatory bodies, INC and SNC, constitution and function, review, professional ethics, code of ethics and professional conduct, INC and ICN, practice standard for nursing, INC, International Council for Nurses, ICN, legal aspect in nursing, Consumer Protection Act, patient right, legal term related to practice and legal system, type of law, tort law and liabilities, law related to nursing practice, negligence, malpractice, breach, penalties, invasion of privacy, defamation of character, nursing regulatory mechanism, registration, licensure, renewal, accreditation, nurse practice and act, regulation of nurse for nurse practitioner, specialties, nursing practice। यूनिट 18 हो गया यहाँ पर प्रोफेशनल एडवांसमेंट, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मेंबरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटी, पब्लिकेशन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स। तो ये यूनिट 18 होगा और लास्ट यूनिट होगा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ओबीजी नर्सिंग फर्स्ट, इसको सेमेस्टर 6 में शामिल किया गया है। टोटल यहाँ पर तो यहाँ पर से 60। देखते हैं कौन कौन सी यूनिट और कंटेंट्स इसमें शामिल है। यूनिट फर्स्ट होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ इन इंडिया, करंट सिनेरियो, ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया, midwifery in India, transformative education for relationship based and transformative midwifery practice in India, vital health indicators, maternal mortality rate ratio, infant mortality rate, neonatal mortality rate, perinatal mortality rate, fertility rate, maternal death audit, national health programs related to RMNCH plus A, reproductive, maternal, newborn and child health plus adolescent health, current trends in midwifery and OBG nursing, respectful maternity and newborn care, midwifery legal care unit, women centered care, physiologic birthing and demedicalization of birth, birth center, water bath, lotus birth, essential competencies for midwifery practice, universal right of childbearing women, sexual and reproductive health and right women, expectations and choices about care, legal provisions in midwifery practice in India, INC, MOH and FW regulations, ICM, Code of Ethics, ethics issues in maternal and neonatal care. Next, Adoption Law, MTP Act, Prenatal Diagnostic Test, PNDT Act, Surrogate Mothers, Role and Responsibility of a Midwife, Nurse Practitioner, Midwife in different setting, hospital, community, Scope of Practice for Midwife। यूनिट सेकंड होगा यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कंसेप्शन, मैटरनल, फेटल एंड न्यूबॉर्न, फिजियोलॉजी, रिव्यू,
Review of female organ of reproduction, female pelvis, bone, joints, ligaments, planes, diameter, landmark, inclination, pelvic variation, fetal skull, bone, sutures, fontanelles, diameter, modeling, feto-pelvic relationship, physiology of menstrual cycle, menstrual hygiene, fertilization, conception and implantation, embryologic development, placental development function, placental barrier, fetal growth and development, fetal circulation and nutrition. यूनिट थर्ड होगा assessment and management of the normal pregnancy, antenatal pre-pregnancy care, review of sexual development, self-learning, socio-cultural aspect, human sexuality, self-learning, preconception care, preconception counseling, including the awareness regarding normal birth, genetic counseling, planned parenthood, pregnancy assessment and antenatal care, first, second, and third trimester, normal pregnancy, physiological changes during pregnancy, assessment and confirm pregnancy, diagnosis of pregnancy sign differences, differential diagnosis and confirmative test, review of maternal nutrition and malnutrition, building partnership with women following RMC protocol, father's engagement in maternity care, antenatal care, first trimester, antenatal assessment, history taking, physical examination, breast examination, laboratory investigation, identification and management of the minor discomforts of pregnancy, antenatal care as per the GOI guideline, antenatal counseling, lifestyle change, nutrition, shared decision making, risky behavior, sexual life during pregnancy, immunization, etc. Danger sign of during pregnancy, respectful care and compassionate communication, recording and reporting as per the GOI guideline. Role of DOLA ASHA ASA. सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल असेसमेंट, एब्डोमिनल पाल्पेशन, फीटल असेसमेंट, ऑस्कल्टेशन, फीटल हार्ट रेट, डॉपलर एंड पिनार्ड स्टेथोस्कोप, assessment of the fetal well-being, DFMC, biophysical profile, non-stress test, cardio tocography, USG, vibrio acoustic stimulation, biochemical test. एंटीनेटल केयर में antenatal care, women centered care, respectful care and compassionate communication, health education on IFA, calcium and vitamin D supplementation, glucose tolerance tests, etc. Education and management of physiologic change and discomfort of second trimester, RH negative, prophylactic anti-D referral and collaboration empowerment, ongoing risk assessment, maternal mental health. थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल असेसमेंट, एब्डोमिनल पाल्पेशन, fetal assessment, auscultate, fetal heart rate, Doppler and Pinard stethoscope. Educational and management of the physiological change and discomfort of third trimester test screening, fetal engagement in late pregnancy, childbirth preparation classes. Next, birth preparedness and complication readiness, including micro birth planning, danger sign of pregnancy, recognition of ruptured membrane, education on alternative birthing position, women's preferred choice birth companion, ongoing risk assessment, cultural needs, women-centered care, respectful and compassionate communication, health education on exclusive breastfeeding, role of DOLA or ASA. यूनिट फोर्थ हो गया पर फिजियोलॉजी मैनेजमेंट एंड केयर ड्यूरिंग लेबर, नॉर्मल बर्थ, लेबर एंड बर्थ, ऑनसेट ऑफ बर्थ, लेबर, प्रीवेजिनल एग्जामिनेशन इफ नेसेसरी, स्टेज ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर रूम, ट्राइएज, प्रिपरेशन ऑफ बर्थ, पॉजिटिव बर्थ एनवायरनमेंट, respectful care and communication, drugs used in the labor as per GOI guideline. First
stage, physiology of normal labor, monitoring progress of labor using partograph, labor care guide, assessing and monitoring fetal well-being, evidence-based care during the first stage of labor, management in labor, non-pharmacological, psychological support, managing fear, activity, and ambulation during first stage of labor, nutrition during labor, promote positive childbirth experience for women, birth companion. नेक्स्ट रोल ऑफ ड्यूला आसाज सेकंड स्टेज में फिजियोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ लेबर साइन ऑफ इमिनेंट लेबर इंटरपार्टम मॉनिटरिंग बर्थ पोजीशन ऑफ चॉइस वेजिनल एग्जामिनेशन साइकोलॉजिक सपोर्ट नॉन डायरेक्टिव कोचिंग एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बर्थ कंडक्शन ऑफ नॉर्मल बर्थ चाइल्ड बर्थ essential newborn care immediate assessment and care of the newborn role of the doula asas third stage में physiology placental separation and expulsion hemostasis physiological management of the third stage of labor active management of the third stage of labor recommended examination of placenta membrane and vessel assess perineal vaginal tear injuries and sutures if required. Next, insertion of the postpartum ICD, immediate patient care, initiation of breastfeeding, skin to skin contact, newborn resuscitation. Fourth stage, observation, critical analysis and management of the mother and newborn, maternal assessment, observation, fundal height, uterine consistency, urine output, blood loss, documentation and record of the birth, breastfeeding and latching, managing uterine cramps, alternative complementary therapies, role of doula asas, various childbirth practices, safe environment for the mother and newborn to promote bonding, maintaining a record and report. Unit 5th होगा postpartum care, ongoing care of women, normal purpurium physiology, duration, postnatal assessment of care facility and home care based care, perineal hygiene care, bladder and bowel function, minor disorder of the purpurium and its management, physiology of lactation and lactation management, postnatal counseling and psychological support, normal postnatal baby blues and recognition of the postnatal depression, transition of the parenthood, care of for the woman up to 6 weeks after childbirth, cultural competencies, taboos related to postnatal diet and practices, diet during lactation reviews, postpartum family planning, follow up of postnatal mother drug use in the postnatal period, record and report. Unit 6 होगा assessment and ongoing care of the normal neonate. इसमें family centered care, respectful newborn care and communication, normal neonate physiological adaptation, newborn assessment, screening for the congenital abnormalities, care of newborn up to the 6 week after the childbirth, routine care of the newborn, skin to skin contact and thermoregulation, infection prevention, immunization, minor disorder of the newborn and its management. Unit 7 होगा और लास्ट यूनिट होगा family welfare services, impact of early frequency childbearing, comprehensive range of family planning methods, temporary methods, hormonal, non-hormonal and barrier method, permanent method, male sterilization, female sterilization, action, effectiveness, advantages, disadvantages, myths, misconception and medical eligibility criteria for use of various family planning methods, emergency contraceptives, recent trends and research in contraception. Next, family planning counseling using balance counseling strategy. Next, legal and right aspect of family planning, human rights aspect of family planning, adolescence. Next, youth friendly services, SRHR services,
policies affecting SR, HR, and attitude of nurse and midwife in provision of services, importance of follow-up and recommended timing, gender-related issues in SR as gender-based violence, physical, sexual and abuse, law affecting GBV, and role of nurse midwife, special court of abuse pupil, gender sensitivity, health services including फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ये टोटल 7 यूनिट शामिल की गई है मिडवाइफरी एंड ओबीजी फर्स्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 6 के यहाँ सब्जेक्ट और उनके यूनिट देखे कौन कौन से इसके कंटेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।